Hello everyone, welcome to the sixth and last lecture of motion in straight line. Today we'll discuss the MCQ questions from the topic of relative velocity. So moving to the question number 83 of MTG fingertips. Here what it is saying is that a ball A is dropped from a building of height 45 meter. Simultaneously, another identical ball is thrown up with a speed of 50 meter per second. The relative speed of ball B with respect to A at any instant of time is. So here in this particular case, what it's saying, suppose there is a building of height. Assume that this is a building whose height is let me draw the figure first, whose height is about 45 meter. So this is of 45 meter. So from the top of the building where a ball is dropped, this is a particular ball which is indicated by A, and another ball, similar type of ball, identical ball, which is thrown up, identical ball, let it be ball B. So this particular ball B is thrown with a speed of 50 meter per second, and this ball A, which is simply dropped, that means its initial speed is 0 meter per second. Clear? So then what it is asking, relative speed of ball B with respect to ball A. So we know that the concept of relative velocity, suppose if we say relative velocity of, here it is what it is saying, relative velocity of B with respect to ball A. This can be written as velocity of ball B minus velocity of ball A. Okay, so velocity of ball B, that means here this velocity of ball B simply indicates the velocity of ball B with respect to the ground frame minus velocity of ball A with respect to the ground frame. Clear? So here we'll take all these things according to the sign. So here sign convention wise what it's saying, upward motion will be taken as positive and downward motion will be taken as negative. Clear? So particularly here in this particular case, so if we apply the formula, then velocity of ball B with respect to ball A, so velocity of ball B with respect to the ground frame, velocity of ball B with respect to the ground frame B, it is moving upward with a speed of 50 meter per second, and velocity of ball A with respect to the ground frame, it is moving downward with a speed of 0 meters, that means minus 0, that means 0. Clear? So finally what will be the value? Velocity of ball B with respect to A will be VBG is 50 minus 0, so it will be how much? So it will be 50 meter per second. So 50 meter per second will be the correct answer, option D. Moving to the next question. Here in this particular case, a ball A is thrown vertically upward with a speed u. At the same instant, another ball is released from rest at a height h. At time t, the speed A relative to B is speed of A. Okay, so it is just like the previous question. What it is saying is that suppose suppose here in this particular case, what is saying, A is thrown vertically upward with a speed, at the same time the ball is released from rest at a height h. Okay, so assume that here it is not told about any buildings, so assume that this is the ground. Clear? And this is height h. So one ball is thrown vertically upwards. Okay, so suppose this is ball A which is thrown vertically upward with speed u, and another ball, let it be B, which is dropped from a height h, that means its speed u, that is 0 meter per second. Okay, so at time t, the speed of A relative to B, so what it is asking, speed of A relative to B. So speed of A relative to B, that will be EA minus VB. So that is nothing but VAG minus VBG.
but the given informations are velocity of a with respect to the ground frame, a का velocity कितना है या फिर speed कितना है, u upward है, and velocity of v with respect to the ground frame is how much, 0. Clear? So finally VAB will be how much? So it will be VAG minus VBG. VAG is u minus 0, so that will be how much? That will be simply u meter per second. So velocity of A with respect to B will be u meter per second. That means option A will be the correct one. Next, moving to question number 85, what it is saying is that two cars A and B are running at velocity 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastward? Clear? So here in this particular case, there are, suppose assume that there are two cars. This is car A, and there is another car. There is another car which is car B. Both are moving eastward. That means direction wise, if we say here, direction wise, north, south, east and west. Clear? So both cars are moving eastward, and the velocity of car A is 60 kilometer per hour, and velocity of car B is how much? 45 kilometer per hour. Clear? What is the relative velocity of car A with respect to car B? Relative velocity of, so then formula is relative velocity of car A with respect to B. Clear? That will be how much? VA minus VB, and VA minus VA is nothing but velocity of car A with respect to the ground frame minus velocity of car B with respect to the ground frame. VA यहाँ पे इंडिकेट करता है velocity of car A है with respect to the ground frame. बार बार हमें ग्राउंड अगर आप if you अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं. तो यहाँ पे what is the velocity of car A with respect to the ground frame? तो ground frame के हिसाब से it is 60 km per hour, and velocity of car B with respect to the ground frame कितना है यहाँ पे? 45 km per hour. Clear? So the value will be VA is equal to 60 minus VB is equal to 45. As both are moving in the positive direction, that means sign convention wise, the velocities will be taken as positive. So finally how much will be coming? It will be coming 15 km per hour. It will be coming velocity of car A with respect to B will be 15 km per hour. So option A will be the correct. Okay, here in question number 80, it's a connected question. In question number 85, what is the relative velocity of car A with respect to car B if car A is moving eastward and car B is moving westward? So in the previous question, all rest other informations will be same, but here direction of motion is changing. Clear? So here what is changing? Where here direction of motion is changing. That means in the previous question this was the figure, but here in this particular case what actually is happening is that here in this particular case car A, right now car A is moving towards east. Here in the car A is moving to eastward and car B is moving westward. Car A is moving towards east with a speed of 60 km per hour, and car B, suppose assume that car B somewhere else, here car B which is moving towards west with a speed of 45 km per hour. Clear? So right now what it is asking, relative velocity, same relative velocity of car A with respect to car B. Clear? Velocity of car A with respect to car B. So here sign convention, what will be the sign convention? Measurement towards right will be positive and measurement towards left will be negative. Left side की तरफ जो measurement होगा उसको हमें negative लेना है. Clear? So here in this particular case, so then what will be the velocity of car A with respect to car B? That means VAG minus VBG.
but VAG is how much? VAG is 60. Clear? VAG is 60, पॉजिटिव 60, एंड VBG, ये इसका वैल्यू कितना होगा? VBG यहाँ पे कार भी लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स -45. क्लियर? सो इट विल बी -45. So finally how much? 60 plus 40, 100, so 105 kilometer per hour. So velocity of car A with respect to car B will be how much? 105 or 105 kilometer per hour. Okay, in question number 87, what it is saying is that on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. This is for car A. And car B, okay, 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour. Is at a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does. The minimum required acceleration for car B to avoid an accident is, okay, fine. So here in this particular case, on a two-lane road, that means assume that this is one lane and this is another lane. So here in this particular case, there are two lanes, and here in this particular case, the cars generally moves in this particular case path, and this is the. So in this two-lane road, what it is saying is that here car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Suppose assume that this is car A. Here car A, here this is the top view. यहाँ पे top view है. टॉप व्यू में यहाँ पे कार A is traveling with a speed of 36 km per hour. 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions. Two cars, okay, fine, opposite direction से, and okay, दोनों का speed यहाँ पे 54 है, and after some time what B decides to overtake A before C does. Clear? Opposite direction, that means B will be in the same lane of car A. So assume that here we are taking car B and here we are taking car C. And both are having speed of 54 km per hour. And here C is moving in the opposite direction, 54 km per hour. Clear? At a certain instant, when the distance between distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer. Okay, so this is the scenario how the whole system is there. Clear? So what actually happens is that there is particular instant, एक instant ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, क्या होता है कि कार ए जो लेन है यहाँ पे, वो लेन वैसा का वैसा रहता है. क्लियर? लेन रिमेन्स लाइक दैट. इस वाले पर्टिकुलर केस में टेक द दिस इज द मिडिल वन which is separating. So here this car A, assume that this is car A, it remains like this, and car B at a particular instant what actually happens is that this is car B and this is car C. एक ऐसा इंस्टेंट यहाँ पे ऐसा आता है कि ये कार ए का पोजीशन है, कार बी का पोजीशन है, और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 किलोमीटर, एंड ए सी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट ऑल्सो रिमेन्स 1 किलोमीटर. क्लियर? So after this particular instant, what B decides to overtake A. Clear? Before C crosses A. Clear? B यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो A को ओवरटेक करेगा ताकि बिफोर जब तक C यहाँ पे A को क्रॉस कर ले अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? सो इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो हाउ टू सॉल्व दिस वन. तो यहाँ पे B ओवरटेक करेगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा तो ओवरटेक कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये हमें मालूम पड़ेगा जब हम स्पीड को देखेंगे यहाँ पे. तो वेलोसिटी ऑफ कार ए इज how much? 36 km per hour.
that means if we convert that one into meter per second, so everything in option sheet is given in meter per second square format. That means SI system में दिया गया तो 36 into 5 upon 18, so it is 2, so 10 meter per second. Similarly, velocity of car B is 54 kilometer per hour, so 54 into 5 upon 18, so it will be 15 meter per second. Clear? So velocity of car B is towards right, that means it is plus 15 meter per second. Then velocity of car C is same, 54 kilometer per hour. Clear? And that will be taken to be negative. Clear? So why it is negative? Because it moves in the opposite direction, so it will be negative 15 meter per second. Okay, so right now here in this particular case, suppose if we choose the frame of A. क्लियर, ए का फ्रेम अगर हम यहाँ पे चूज करेंगे तो ए के फ्रेम में अगर मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ जाए. क्लियर, अगर मान लो कि ए के फ्रेम में यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे ए के फ्रेम में अगर मान लो कि बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से बी का स्पीड कितना होगा और सी का स्पीड कितना होगा. सो द वेलोसिटी ऑफ इन दिस पर्टिकुलर केस, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A. What will be the velocity of B with respect to A? It will be velocity of B minus velocity of A. So velocity of B is how much? B is 15 and velocity of A is how much? 10. Clear? So it will be 5 meter per second. Clear? Similarly, velocity of C with respect to A, that will be VC minus VA. So VC is minus 15 and minus 10, so it will be minus 25 meter per second. That means in this particular case ए में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करता है. क्लियर? तो अगर वो अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करता है तो बाकी बी एंड सी अपने उस रिलेटिव फ्रेम में मूव करेंगे. तो बी ए को ये लगेगा कि बी कितना स्पीड से उसके पीछे से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे से आ रहा है, और सामने से सी कितना स्पीड से उसके तरफ आ रहा है, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड में उसके तरफ आ रहा है. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो फिर कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल टेक बी टू रीच ए. सो टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए. क्लियर? सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, टाइम टेकन बाय बी टू reach A. So time taken by B will be how much? That will be time is equal to distance by speed. So what is the relative distance between AB? Clear? So relative distance between AB is how much? 1 kilometer it is given. Clear? So relative distance between AB that is given how much? That is 1 kilometer. So here distance divided by velocity of B with respect to A. Clear? So distance is how much? Distance is 1 kilometer divided by 5. So it will be 1000 divided by 5. So almost 200 second. Clear? So that means if car B will move with that uniform speed, अगर मान लो कि कार बी जो है वो उतना ही स्पीड से अगर यूनिफॉर्मली मूव करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 200 सेकेंड लगेगा ए तक पहुंचने. Similarly, time taken by C to reach A. A को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय C विल बी इक्वल टू सेम डिस्टेंस. दोनों का तो डिस्टेंस बराबर ही है, मतलब जो इंस्टेंस से हम ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो सेम है. तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A, सो दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू A इज -25. क्लियर? So it will be how much? It will be coming out to be 40 second. Clear? So यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए बट टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो यहाँ पे हमें क्या लेना है? 40 सेकेंड्स. दैट मीन्स सी अगर उतना ही स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव करता है तो उसको 40 सेकेंड लगेगा ए तक पहुँचने के लिए. तो इसका मतलब है बी कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकता है ए को. क्लियर? अगर ये सिनेरियो रहा. क्लियर? तो बट यहाँ पे बी ओवरटेक करने के लिए बोला जा रहा है कि दैट बी विल ओवरटेक, तो उसको कितना उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे रहना चाहिए. क्लियर? सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, हियर
अगर b का यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा तो वो एक्सेलरेशन लेट द एक्सेलरेशन ऑफ b इज a का b का जो एक्सेलरेशन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो a है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि a का एक्सेलरेशन हो रहा है, a इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सेलरेशन ऑफ a is 0. Clear? Acceleration b is a and acceleration of a is 0. So here in this particular case we will use the concept of relative velocity. So relative motion का जो concept अगर हम use करेंगे तो velocity of b with respect to a we already got that is 5 meter per second, 5 meter per second. And here in this particular case relative displacement between a and b, तो relative displacement between a and b इसका वैल्यू कितना है? सिंपली 1 किलोमीटर, दैट मीन्स इट इज 1000 मीटर। इसका वैल्यू कितना है? 1000 मीटर। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है इसमें अगर b को अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाना है तो a के हिसाब से जो b का स्पीड है पहले से ही इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड है उसको बढ़ाना है। क्लियर? कितना टाइम के अंदर में उसको बढ़ाना है? 40 सेकेंड के अंदर में उसको बढ़ाना है। दैट मीन्स हियर टाइम शुड बी हाउ मच? 40 सेकेंड। टाइम यहाँ पे कितना होना चाहिए? 40 सेकेंड के अंदर में बी को यहाँ पे उसका स्पीड बढ़ाना है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ए। क्लियर? सो दैट मीन्स एक्स बी ए जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम यहाँ पे एज्यूम करें कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Clear? So we'll use the formula ut plus half at square. So ut is nothing but relative velocity of b with respect to a into t plus half into relative velocity of relative acceleration of b with respect to a into t square. Clear? So that is xba. So xba, that is the relative displacement between a and b, and that is nothing but 1000 equal to uba. What is uba? That is the initial relative velocity between a and b. तो इनिशियली जो इंस्टेंस से हम लोग मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं तो इनिशियली a के हिसाब से b का स्पीड कितना है? सिंपली 5 है। क्लियर? सो दैट विल बी that okay, let me write it once again. So that will be vba, we already got that value, plus half acceleration of b with respect to a. तो यहाँ पे acceleration of b with respect to a b a का वैल्यू कितना होगा? a b minus a a, but a a is 0, no acceleration of a, so that will be simply equal to a b, and that value is nothing but a. So half into a into t square. Clear? Half into a into t square. So finally VBA is 5 into t. Okay, t is how much? 40 seconds. So 5 into 40 plus half into what is the value of a? That okay, the value of a we want to find it out, and t square is 40 square. So it will be 200 plus half a into 1600. So it is almost 800. So how much will be getting the result over here? We'll be getting the result to be, so 1000 equal to 200 plus 800 a will be equal to simply 800 by 800, that is 1 meter per second square. That means here in this particular case car b must accelerate at the rate of 1 meter per second square, then only it will overtake a before c crosses b. Clear? That it will overtake a. So the value, the perfect answer should be a. Okay, so here in question number 88, what it is saying is that a bird is tossing, that means flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road. One car has a speed 27 km per hour, while the other has the speed of 18 km per hour. The bird starts moving from the first car towards the other, and it's moving with a speed of 36 km per hour when the two cars were separated by 36 km. Okay, fine. So here in this particular case, what it is saying, let me draw the figure first. So here there are two cars.
one is car A, clear, and this car A, let it is moving with a speed of 27 kilometer per hour, clear, and another car which is coming in the opposite direction has a speed, another car, let it be car B, which is coming in the opposite direction with a speed of 18 kilometer per hour, clear. Okay, the bar starts moving from the first car towards the other. अब assume that, यहाँ पे assume कर लेते हैं कि एक बाढ़ है, clear, this is a bird which starts moving from the first car towards the other, and it's moving with a speed of 36 km per hour when the two cars were separated by 36 km. Okay, fine. तो एक बार तो है, मान लो कि यहाँ पे ये जो सिनारियो है, इस सिनारियो में क्या है, ऐसे दो कार्स अपने तरफ आ रहे हैं, इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कुछ नहीं बुलाया गया है. देयर इज ए बार्ड व्हिच इज मूविंग टू एंड फ्रो, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, क्लियर, ए बी के बीच में ऐसे घूमता फिरता हुआ आ रहा है. जब इन दो कार्स के बीच में, जब इन दोनों कार्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, बोला जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 36 किलोमीटर. जब इन दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है, 36 किलोमीटर. तो उसी टाइम पे जो बाढ़ है वो क्या कर रहा है, वो ए से बी के तरफ अपना मोशन शुरू, क्लियर, ए से बी के तरफ अपना मोशन शुरू कर रहा है, क्लियर. और अपना जो मोशन यहाँ पे शुरू कर रहा है वो कितना स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है. तो ए का स्पीड यहाँ पे 27 है और बी का स्पीड यहाँ पे 18 है, क्लियर. ओके, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है, ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन द बी फ्रेम. हियर एज्यूम दैट ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन बीस फ्रेम, क्लियर. तो ऑब्जर्वर अगर बी फ्रेम में बैठा है तो उसमें वो ऑब्जर्वर एज्यूम कर लेगा बी टू बी एट रेस्ट, मतलब कार बी को रेस्ट में एज्यूम करता है, क्लियर. और एक्चुअली जनरल सेंस में ऐसे ही लिया आता है. अब मान लो कि आप बस में जा रहे हो तो और बस मूव कर रहा है, तो हम बस में बैठे, अंदर में बैठे, तो हम अपने आप को एज्यूम करते हैं कि बस रेस्ट में हो, तो बाकी सब चीज़ दुनिया पूरा पीछे की तरफ जा रही है, ऐसे ही हमें लगता है, क्लियर. तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस विल एज्यूम द सेम थिंग, ऑब्जर्वर टू बी इन द बी फ्रेम, क्लियर. तो देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, velocity of A with respect to B will be how much? So velocity of A with respect to will be VA minus VB, and VA is 27 and VB is minus 18, because B is moving in the negative direction, so it will be taken minus 18. So it will be 27 plus 18, and that value will be equal to 45 kilometer per hour, clear. So velocity of, so what we got right now, velocity of car A with respect to B is 45 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब है ये जो सिनारियो है इसमें अभी चेंजेस क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस ये है कि ये कार ए का स्पीड अभी 27 नहीं है, या फिर कार बी का स्पीड अभी 18 नहीं है, क्लियर. तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं कार ए का जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू बी के फ्रेम में कार ए का स्पीड कितना आ रहा है, कार ए का स्पीड हमें लेना है 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर. ओके, तो इस इंस्टेंट पे जब इन दोनों कार के बीच में डिस्टेंस 36 किलोमीटर है, तो बी फ्रेम में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसको ये लग रहा है कि कार ए उसके तरफ कितना स्पीड से आ रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर. और उसी इंस्टेंट पे जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, तो उस समय सेपरेटली यहाँ पे जो बार्ड है वो बार्ड कितना स्पीड से आ रहा है, वो आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, क्लियर. तो बर्ड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्लियर. तो ऑब्वियसली ये जो मतलब ये दोनों जब मीट करेंगे, जिस भी टाइम पर ये दोनों मीट करेंगे, क्लियर, जो भी टाइम हो,
तो उतना ही टाइम में ये बाढ़ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। तो पहले तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ मीटिंग। क्लियर। टाइम टेकन टू मीट, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे मीट करने के लिए। सो टाइम टेकन विल बी हाउ मच। सो विथ रिस्पेक्ट टू बी के फ्रेम से ही हमें यहाँ पे जूम करना है बी रेस्ट में। तो अभी कार है यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, तो उसको डिस्टेंस कवर करना है 36। तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। So relative distance is 36 divided by velocity is 45. So how much will be getting? So 9 4 the 36, 9 5 the, so it is 4 upon 5. That means it will be 0.8. Time taken will be 0.8 hour. Clear? So that means what? After 0.8 hour, these two cars will meet. Clear? तो अपने हिसाब से ये जैसा मीट करेंगे तो कितना टाइम के बाद ये दोनों मीट करेंगे 0.8 आवर। सो विद इन दैट 0.8 आवर उतना ही टाइम में ये बाढ़ कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बाढ़ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। द डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड विल बी इक्वल टू velocity of the bird into time. So velocity into time. So velocity is how much? 36 into 36 into 0.8 or 0.8, or you can write it 36 into 4 upon 5. So if you just calculate that value, so how much it will be coming? Approximately, if you take 7.2, so 7.2, so it will be 4 to the 8 and 4 7 the 28.8. So distance covered by the bird will be 28.8 meters. So that will be the answer, 28.8. So this option A will be the correct. Next, moving to question number 89. Here in this particular case, what it's saying is that a police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour, clear, fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with the speed of 192 km per hour, clear. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car, clear. So here in this particular case, what it is saying is that there is a police van that is indicated by the red color van. This is police van which is moving with a speed of 30 km per hour, clear. Okay, here in this particular case, what it is saying is that the thief here in this particular case, it is moving away from, it is moving away from the police car in the same direction with the speed. This is thief's car, it is moving in the same direction with the speed of 192 km per hour, clear. Okay, fine. So here in this particular, if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, muzzle speed of the bullet, यहाँ पे जो पुलिस वैन है, पुलिस वैन से क्या हो रहा है, एक बुलेट फायर किया जा रहा है, क्लियर। पुलिस वैन से जो क्या है, एक बुलेट फायर किया जा रहा है, और जो बुलेट का जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ द बुलेट, यहाँ पे मान लो कि बुलेट, ये बुलेट है, दैट्स in the bullet which is fired towards the thief's car with some speed of how much? 150 meter per second, clear. So 150 meter per second, 150 into 18 upon 5, so it will be 30, so it will be 540 kilometer per hour, clear. That means it will be fired with a speed of 540 kilometer per hour, clear. अच्छा, बिफोर फायरिंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, क्लियर। फायर होने से पहले बुलेट का स्पीड कितना था, तो फायर होने से पहले बुलेट जो है वो गन के अंदर में है, और वो गन कहाँ पे है, पुलिस के पास है, और पुलिस किस में है, पुलिस के वैन में है, क्लियर।
तो पुलिस का वैन अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो गन भी उतना ही स्पीड से पहले से ही मूव कर रहा है। तो गन के अंदर में जो बुलेट होगा वो भी कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, वो भी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा होगा। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बुलेट, एक्चुअल स्पीड ऑफ द बुलेट इन द व्हाट विल बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बुलेट इन द ग्राउंड फ्रेम। क्लियर? तो उस वाले पर्टिकुलर केस में जो ग्राउंड फ्रेम में जो बुलेट का स्पीड होगा वो कितना होगा, तो वो होगा कितना, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। So here in this particular case what the given information is that velocity of bullet with respect to the police that is given, and that is nothing but 540 किलोमीटर पर आवर, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, दैट मीन्स वी कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न एज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल टू 540 velocity of bullet in the ground frame minus velocity of police van in the ground frame equal to 540. So velocity of bullet in the ground frame will be equal to how much, velocity of police van in the ground frame plus 540. So velocity of police van is 30 plus 540, so it will be 570 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 570 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स व्हाट वी गॉट राइट नाउ इज दैट, तो अभी हमें क्या मिला यहाँ पे, जो बुलेट का जो स्पीड, एक्चुअल स्पीड है इन द ग्राउंड फ्रेम वो कितना होगा, 570 किलोमीटर पर आवर। एंड विथ दैट मच स्पीड, उतना ही स्पीड से जाते हुए ये क्या होगा, दैट विल strike, that will hit the thief's car। क्लियर? सो उतना ही स्पीड से वो क्या होगा, वो thief's car को यहाँ पे क्या करेगा, हिट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे कितना विथ वाट स्पीड, यहाँ पे पूछा गया विथ वाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिफ्स कार, ये इंपॉर्टेंट है। सो बुलेट अभी 570 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से थिप के तरफ आ रहा है। क्लियर? तो अभी हम ऑब्जर्वर को कहाँ पे रखेंगे, विल पुट द ऑब्जर्वर। सो दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट एक्चुअली द थिंग इज दैट this bullet is moving towards the thief's car with a speed of 570 kilometer per hour, and the thief's car is speeding away with the speed of 192 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे ना, ऑब्जर्वर को हम कहाँ पे बैठा देंगे, थिप्स कार में मान लो कि ऑब्जर्वर ही जोर है। क्लियर? तो ऑब्जर्वर यहाँ पे वो बुलेट को देखेगा, तो बुलेट कितना स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो वही होगा हमारा हिटिंग स्पीड। क्लियर? सो वेलोसिटी ऑफ bullet with respect to the thief's car, that we need to find out. So that will be velocity of bullet in the ground frame, velocity of thief's car in the ground frame. Velocity of bullet is 570 and thief's car is 192. So if we take the difference of 570 192 8, and here it will be 6 7, so here 4 minus 1, that is 378. So it will be coming to be 378 kilometer per hour. That means the bullet will hit the thief's car with a speed of 378 kilometer per hour. But here it is we have to convert it into meter per second. So well, this is velocity of bullet with respect to thief's car. So 378 into 5 upon 18. So 18 2 ja 36, 18 1. So it will be 510. Okay. So it is coming out to be 105 meter per second. Velocity of bullet with respect to thief's car. This is the final answer. 105, 105. Option B. Option B is the correct one. Okay, in question number 90, what it's saying is that a bus is moving with a speed of here nothing is given, it is 10 meter per second. A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. Assume that there is a bus which is moving on the straight road with a speed of 10 meter per second. Clear?
A scooterist wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड. तो ओवरटेक करेगा तो उसका मतलब है पीछे होगा. क्लियर. एज्यूम दैट देयर इज अ स्कूटरिस्ट. क्लियर. स्कूटरिस्ट व्हिच इज which want to overtake the bus in 100 सेकेंड. 100 सेकेंड के अंदर में उसको ओवरटेक करना चाहता है. इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट. बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 1 kilometer, that means 1000 meter from the scooterist. With what speed should the scooterist chase the bus? तो हम स्कूटरिस्ट का जो स्पीड है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं v. क्लियर. तो कितना स्पीड से ये स्कूटरिस्ट यहाँ पे इस बस को चेस करेगा, मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा. क्लियर. ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितना होगा ताकि ये 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस अभी इन दोनों के बीच में है उसको वो 100 सेकेंड में क्रॉस कर सके. क्लियर. 100 सेकेंड में उसको अचीव कर सके. क्लियर. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस what we'll be doing is that we will be try to find out the relative velocity first. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें किसको ओवरटेक करेगा? बस को ओवरटेक करेगा. तो ऑब्जर्वर कहाँ पे हम रखेंगे? ऑब्जर्वर को हम बस में ही बैठा देंगे. क्लियर. तो ऑब्जर्वर अगर बस में बैठ गया है तो ऑब्जर्वर अभी रेस्ट में होगा, तो मतलब बस को हमें एज्यूम करना है रेस्ट में. तो स्कूटरिस्ट का स्पीड कितना? सो स्कूटरिस्ट का स्पीड होगा वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर, वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर with respect to the observer, which is nothing but bus. Here that means that will be velocity of scooter with respect to bus. Clear. That value will be velocity of scooter minus velocity of bus. Clear. So velocity of scooter is how much? Velocity of that means VSB, which is nothing but VS minus VB. तो velocity of scooter को हमें V assume करना है and velocity of B कितना है? 10, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है. क्लियर. तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है तो दोनों का वैल्यू हमें पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे. तो VSB का वैल्यू कितना आ रहा है? V माइनस 10. दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे बस में बैठा है उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा, क्या लगेगा उसको कि ये जो स्कूटर है, द स्कूटर इज कमिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ स्पीड ऑफ v माइनस 10 एंड द बस इज एट रेस्ट. मीन्स इसका ये क्या है, अभी इसका स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड. अच्छा भाई इतना है. तो सिंपल फंडा है. अभी ये रेस्ट में है. तो एक चीज़ यहाँ पे v माइनस 10 के स्पीड से आ रहा है और वो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो यहाँ पे है दो ऑब्जेक्ट के बीच में और जो कि मूव कर रहा है, तो वो क्या है, मतलब वो कोई भी मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. क्लियर. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? तो स्कूटर अगर 10 v माइनस 10 के स्पीड से 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 सेकेंड में, तो v का वैल्यू कितना होगा? सो हमें सिंपल रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है. तो v माइनस 10, सो वेलोसिटी हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे? v वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो v माइनस 10, तो ये फॉर्मूला है v इक्वल टू एक्स बाई, इस फॉर्मूला को हम यूज़ करें तो v माइनस 10 इक्वल टू डिस्टेंस कवर दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 100. सो 2 0 कट गया यहाँ पे. सो कितना आ रहा है? v माइनस 10 इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर विल बी हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. Okay, here in question number 91, what it is saying is that two towns A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. Clear? Okay, fine. So here in this particular case, assume that there are two towns. Clear? So assume that there are two towns over here, New York City, मान लो. Okay, so here town, this is town A and another town. Let me copy that one. Okay. This is town. Okay, fine. So here let it be town B. That is indicated by town B.
Here, so here this is town B and here it is town A. Clear? So here in this particular case, these two towns are connected by a bus service and what it is saying, every t minutes, हर t मिनट में क्या हो रहा है, एक बस यहाँ से निकल रहा है. क्लियर? ओके. हर टी मिनट में एक बस यहाँ से निकल रहा है, मतलब हर टी मिनट में मान लो कि ये बस मान लो कि ए से अभी एक बस यहाँ से निकला. क्लियर? तो टी मिनट के बाद एक दूसरा बस निकलेगा. तो टी मिनट में ये जो पहला बस है, ये बस मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया होगा. क्लियर? तो दूसरा बस यहाँ पे, ये सेकंड होगा. नेक्स्ट टी मिनट के बाद क्या होगा, ये पहला जो बस है, दिस बस विल रीच ओवर हियर, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा. क्लियर? तभी तो जाके थर्ड बस ये होगा. क्लियर? तो ये मान लेते हैं कि ये पहला बस है, ये दूसरा बस है और ये तीसरा बस है. ऐसे ही बस यहाँ से निकल रहा है. क्लियर? तो सिमिलरली, क्लियर, तो साइमल्टेनियसली वैसा ही यहाँ पे क्या हो रहा है, टाउन बी से भी बस निकल रहा है. टाउन मान लो कि पहले जो टाइम है, पहला मान लो कि 0 सेकेंड में, 0 सेकेंड 0 टाइम में क्या हो रहा है, एक बस यहाँ से निकल रहा है. क्लियर? वन बस इज कमिंग फ्रॉम बी. क्लियर? जब टाइम टी होगा तो ये बस यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया होगा. एज्यूम दैट बस हैज रीच्ड ओवर हियर. ये जो बस है, बस मान लो कि यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया है. क्लियर? जब टी टाइम हुआ. क्लियर? ये बस, तो सेकंड बस यहाँ पे ये सेकंड होगा. क्लियर? अब जब टाइम 2t होगा, 2t टाइम में क्या होगा, ये जो पहला बस है दैट विल रीच ओवर हियर, ये यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया होगा, ये मान लो यहाँ पे. क्लियर? तो ये वाला सिचुएशन है 2t टाइम पे. वैसा ही यहाँ पे ये पहले जीरो टाइम में निकला, फिर ये टी टाइम में, और ये फिर 2t टाइम में यहाँ पे निकल रहा है. क्लियर? ऐसे ही बस यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट, मतलब टाउन ए से टाउन बी की तरफ बस जा रहा है और टाउन बी से टाउन ए की तरफ बस आ रहा है. क्लियर? अच्छा, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, देयर इज ए मैन हु इज साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ए टू बी. अच्छा, ए से बी तक एक मैन है जो कि साइकिलिंग कर रहा है. क्लियर? सो एज्यूम दैट ए मैन हु इज साइकिलिंग, तो ये एक साइकिल है जिसमें एक आदमी ए से बी की तरफ जा रहा है. कितना स्पीड से, 20. ये 20 के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये राइट साइड की तरफ जा रहा है. नोटिसेस दैट ए बस गोज पास्ट हिम इन एवरी 18 मिनट, हर 18 मिनट में एक बस उसको ओवरटेक कर रहा है. इन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये जो हर एक बस है, क्या हो रहा है, हर 18 मिनट में एक बस लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पे ये ब्लू कलर वाले बस उसको ओवरटेक कर रहे हैं. और वैसा ही हर 6 मिनट में क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रेड कलर वाले बस है 6 मिनट में उसको क्रॉस कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द बस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द बस. जो टाइम पीरियड से यहाँ से निकल रहे हैं बस, ये जो टी ये जो है, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा. क्लियर? अच्छा, तो इसको हम रिलेटिव फ्रेम में ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे. तो रिलेटिव फ्रेम में जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्जर्वर को हम कहाँ पे बिठा देंगे, ऑब्जर्वर को हम यहाँ पे, जो साइकिल है तो साइकिल में हम उसको बिठाएंगे. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बस का स्पीड, हर एक इंडिविजुअल बस जो कि टी टाइम के बाद निकल रहा है दोनों टाउन से, हर एक बस का स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं. मान लो कि लेफ्ट साइड से जो भी बस आ रहा है वो भी स्पीड से आ रहा है. हर एक बस यहाँ पे कितना स्पीड से आ रहा है, भी स्पीड से. क्लियर? भले ही रेड कलर वाले हो या फिर ब्लू कलर वाले, हर एक बस कितना स्पीड से आ रहा है, भी स्पीड से यहाँ से आ रहा है. क्लियर? अच्छा, तो डिस्टेंस कवर्ड अगर मान लो कि टी टाइम के बाद निकल रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है दो बस के बीच का जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगा. क्लियर? कोई भी दो बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो सेम होगा. क्लियर? भी स्पीड से अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं हर टी टाइम इंटरवल के बाद, टी टाइम के बाद उन दोनों वो सेम डिस्टेंस ही कवर करेंगे. क्लियर? बिकॉज वी आर टेकिंग द आइडियल सिचुएशन. तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल टेक द फ्रेम ऑफ द साइकिल. तो साइकिल का फ्रेम लेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को यहाँ पे कहाँ पे बिठा देंगे, साइकिल में बिठा देंगे. तो ऑब्जर्वर अगर साइकिल में बैठ गया तो ऑब्जर्वर क्या एज्यूम करेगा, दैट ऑब्जर्वर विल एज्यूम, ऑब्जर्वर फ्रेम में हम अगर पूरा का सिस्टम को ले जाएंगे यहाँ पे, एज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर केस
ऑब्जर्वर का फ्रेम है, हम उसको ले जाएंगे। तो ये होगा, मान लो कि ये वाला केस, ये वाला सिचुएशन। तो ऑब्जर्वर का फ्रेम अगर हम लेंगे तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये स्पीड कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। तो साइकिल का स्पीड हमें कितना एज्यूम करना है, 0, 0 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो लेफ्ट साइड से जो टाउन ए से जो बस आ रहा है, तो उन सभी बसेस का स्पीड कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और द साइकिल। क्लियर। सो वेलोसिटी ऑफ we can say buses coming from town A. Clear. Velocity of buses coming from town A with respect to the cyclist, and that value will be how much, velocity of A minus velocity of C. क्लियर। तो साइक्लिस्ट का वेलोसिटी को हमने एज्यूम कर लिया कि 0 है। तो ए का यहाँ पे जो वेलोसिटी इस वाले पर्टिकुलर केस में, ओके फाइन। सो ओके, साइक्लिस्ट का जो वेलोसिटी है तो वो 0 है, लेकिन जो पहले केस में ग्राउंड फ्रेम में ये जो हम लिख रहे हैं ये 0 नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बस, मतलब जो बस यहाँ पे टाउन ए से आ रहा है इन द ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इन द ग्राउंड फ्रेम। क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जो बसेस टाउन ए से निकल रहे हैं उनका स्पीड कितना है, v, और साइक्लिस्ट का ग्राउंड फ्रेम में स्पीड कितना है, 20। तो ये होगा कितना, v माइनस 20। अच्छा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे ये जो साइक्लिस्ट को रेस्ट में हम ले रहे हैं उसमें जो ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो ये ऑब्जर्व करेगा हर एक बस जो टाउन ए से आ रहा है वो कितना स्पीड से आ रहा है, वो v माइनस 20 के स्पीड से आ रहा है। वो कितना स्पीड से आ रहा है, वो v माइनस 20 के स्पीड से आ रहा है। क्लियर। अच्छा, सिमिलरली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर मान लो कि टाउन बी से जो बसेस आ रहा है उनके बारे में हम देखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बसेस कमिंग फ्रॉम टाउन बी विथ रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट, ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। सो वेलोसिटी ऑफ बी इन द ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इन द ग्राउंड फ्रेम। सो वेलोसिटी ऑफ बी जो बसेस यहाँ पे आ रहे हैं तो उसको हमें नेगेटिव लेना है। क्लियर, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड की तरफ मेजरमेंट को हम नेगेटिव लेंगे कब, जब राइट साइड की तरफ मेजरमेंट पॉजिटिव होगा। क्लियर। सो माइनस बी माइनस साइक्लिस्ट का जो स्पीड ग्राउंड फ्रेम में वो कितना है, वो 20 है, वो कितना है 20, और वो भी राइट साइड तो पॉजिटिव होगा, सो माइनस 20। सो इट विल बी माइनस ऑफ v प्लस 20। तो ये होगा। क्लियर। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो बसेस, रेड कलर का जो बसेस है वो जो कि टाउन बी से निकल रहा है उनका स्पीड कितना होगा, v प्लस 20 हो जाएगा। ये सब कितना स्पीड से निकल रहे हैं, v प्लस 20, ये सब v प्लस 20 के स्पीड में लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। अच्छा, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो ये सभी बस v प्लस 20 के स्पीड में d डिस्टेंस कवर करें। d डिस्टेंस यहाँ पे ये भी ये ब्लू कलर बसेस v माइनस 20 के स्पीड में d डिस्टेंस कवर करें। ये सिचुएशन कैसा होगा, ये सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा है। क्लियर। ये जो सभी बसेस है लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं वो कुछ ऐसे मूव करें। क्लियर। तो मान लो कि ये जो पहला बस है, क्लियर, ये जो पहला बस ब्लू कलर बस जो है, जब ये साइक्लिस्ट को क्रॉस करेगा तो उसके डी डिस्टेंस पीछे एक दूसरा बस होगा। क्लियर। तो वो कुछ समय के बाद उसको क्रॉस करेगा, तो कितना समय के बाद क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन ओवर हियर इज दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे बस जो टाउन ए से निकल रहे हैं, क्लियर, वो कितना समय के बाद हर एक बस साइक्लिस्ट को क्रॉस करें, 18 मिनट में हर एक बस साइक्लिस्ट को क्रॉस करें। वैसे ही हर 6 मिनट में क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक बस उसको क्रॉस कर रहा है। क्लियर, साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रहा है। तो उसका सिचुएशन कैसा है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये आप देखोगे तो ये जो सिचुएशन ऐसा है कि मान लो कि ये जो पहला बस है अभी साइक्लिस्ट के पास है। क्लियर। तो दूसरा बस साइक्लिस्ट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगेगा। क्लियर।
और तीसरा बस जो है, जो साइक्लिस्ट के तक पहुंचने के लिए कितना होगा, कितना टाइम उसको लगेगा, 18 मिनट के बाद वो साइक्लिस्ट तक पहुंच जाएगा। क्लियर, तो ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे रहेगा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रेड कलर वाले बसेस को देखेंगे, तो रेड कलर बस वाले जो बसेस है उनका क्या हो रहा है, वो अभी साइक्लिस्ट के हिसाब से V+20 के स्पीड में अगर मूव करें, तो पहला बस मान लो कि अभी साइक्लिस्ट को क्रॉस किया, तो दूसरा बस साइक्लिस्ट को कब क्रॉस करेगा, 6 मिनट के बाद क्रॉस करेगा। फिर नेक्स्ट 6 मिनट के बाद क्या होगा, तीसरा बस यहाँ पे साइक्लिस्ट को क्रॉस करेगा। तो ऐसे ही सिचुएशन क्या होगा, दोनों केसेस में यहाँ पे बराबर चल रहा होगा। मतलब उस हर 18 मिनट में एक ब्लू कलर बस यहाँ पे राइट साइड की तरफ जा रहा होगा, मतलब साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रहा होगा, और हर एक 6 मिनट में क्या होगा, एक रेड कलर बस यहाँ पे साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रहा होगा। क्लियर। अच्छा, तो हर 6 मिनट में यहाँ पे, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, रेड कलर वाले बस जो है, ये ब्लू कलर वाले जो बस है यहाँ पे, इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे, तो ये जो, इसको हम ले लेते हैं जो ब्लू कलर बसेस। क्लियर। तो ब्लू बस। क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, एवरी ब्लू कलर bus overtakes the cyclist in 18 मिनट। क्लियर। वैसा ही यहाँ पे हम रेड कलर बसेस के लिए हम लिख सकते हैं, दिस इज फॉर रेड कलर, रेड बस का भी एक है ना, रेड बस चलता है। सो एवरी रेड कलर बसेस crosses the cyclist in 6 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक रेड कलर, हर एक ब्लू कलर बस कितना टाइम में ओवरटेक करता है, 18 मिनट में। तो 18 मिनट कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इट कवर्स डी डिस्टेंसेस। कितना डिस्टेंस कवर करता है, डी डिस्टेंस। और ये 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 मिनट में ये डी डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर, ये 6 मिनट में डी डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर। तो फाइनली, सो डी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इनटू टाइम। अच्छा, टाइम ये जो इस वाले पर्टिकुलर केस में 18 मिनट, इसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट, दैट मीन्स 18/60 आवर। So velocity of A with respect to C that we got right now, so V minus 20 into 18/60, so it will be how much, 3/10, so it will be 3/10. So D, what we are getting is that 3/10 into V minus 20. Okay, this is equation 1. Similarly here in this particular case, ये वाला पर्टिकुलर केस में डी का वैल्यू कितना होगा, डी इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये जनरल फॉर्मूला है। क्लियर, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला। सो इफ यू यूज द एक्चुअल, सो दैट मीन्स दिस वी इज नथिंग बट वी बी सी इंटू टी। सो वी बी सी इज हाउ मच, so it is if we take magnitude wise, it will be v plus 20 into t is 6 minutes, that means 6/60 hour, so 1/10, so it will be 1/10 into v plus 20, 1/10 into v plus 20. So this is what we are getting, d is equal to 1/10 into v plus 20. So this is equation number 2. Okay, so equating both the equations, equating 1 and 2, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा। सो फ्रॉम लेफ्ट साइड 3/10 into v minus 20, that will be equal to, from the right side, 1/10 into v plus 20. Clear. So finally here in this particular case, 10 got cancelled. Clear. So finally how much will be getting,
So we'll be getting 3v minus 60. 3v minus 60 will be equal to v plus 20. So from here 2v equal to 80. So how much will be getting v? V will be getting 40. 40. It will be किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? तो ये वाला केस यहाँ पे. अच्छा, तो सिचुएशन यहाँ पे अभी समझ में आ गया. तो हर एक बस का स्पीड यहाँ पे कितना है? स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. हर एक बस, अगर ग्राउंड फ्रेम में हम देखेंगे तो हर एक बस का स्पीड यहाँ पे कितना है? दैट स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अच्छा, अगर हर एक बस का स्पीड यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस. क्लियर? तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? सो कोई भी एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं. सो डी विल बी इक्वल टू 3/10 इंटू वी माइनस 20. सो इट विल बी 3/10 इंटू वी इज 40 minus 20. So that will be 3/10 into 20. So 2. So it will be 6 किलोमीटर. सो हर एक टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? बस 6 किलोमीटर. दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, डी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर. तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम फिगर में देखेंगे तो ये जो डी का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 6 किलोमीटर. ये डी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 6 किलोमीटर. क्लियर? दैट मीन्स हर टी टाइम में, यहाँ पे अभी ये है ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है कि हर टी टाइम में एक बस निकल रहा है. क्लियर? और हर टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर हर एक टी टाइम में, इफ इन एवरी टी टाइम ए बस comes out from towns A and B, and then here in this particular case the distance covered, town A and B with speed what? Speed v. Then distance covered will be equal to v into t. Clear? So distance covered is 6 kilometer per hour is equal to velocity is 40 into t. So the value of t, how much we are getting? We are getting 66/40. So it is coming out to be 2 3 6 and 2 20. So it will be 3/20 hour. And if we convert that one into minute, so 3/20 into 60, 1 hour equal to 60 minutes. So it will be 220 into 3 equal to 60. So it will be 9 minutes. So time taken. So that means here in this particular case the time period of the bus service is how much? 9 minutes. हर 9 मिनट में क्या हो रहा है? एक बस यहाँ पे दोनों टाउन से यहाँ पे निकल रहा है. Okay, moving to question number 92. Here in this particular case, what it is saying is that this 175-meter long train is traveling along a straight track with a velocity of 72 km per hour. A bird is flying parallel to the train in opposite direction with a speed of 18 km per hour. The time taken by the bird to cross the train is. So there is a train which is 175 meter long. This is a train which is 175 meter long. Clear? And it is traveling with a speed of 72 kilometer per hour. That means if we convert that one, so अगर हम इसको convert कर लेंगे तो 72 into 5/18, so 4, so it is 20. So it is or 20 meter per second. Clear? अच्छा, ये ट्रेन है. अच्छा, सिमिलरली वहाँ पे क्या? ए बर्ड इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. देयर इज ए बर्ड व्हिच इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? एंड इट इज फ्लाइंग विथ ए स्पीड ऑफ हाउ मच? 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर. सो दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में.
then the time taken by the bat to cross the train, how much time it will take. Then here in this particular case, how can you solve? So we'll take the help of relative velocity. Clear? अभी यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो बार्ड है. क्लियर? तो ऑब्जर्वर अगर बार्ड होगा, bird is considered as the observer. अगर बर्ड यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर मान लो कि बार्ड के ऊपर यहाँ पे बैठ गया है. क्लियर? तो बार्ड को हमें एज्यूम करना होगा कि वो रेस्ट में है. क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम इज -5. क्लियर? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम इज 20. क्लियर? -5 meter per second, this is 20 meter per second. Clear? Then what will be the velocity of train? Clear? Here in this particular case, velocity of train with respect to the bird. तो ये वैल्यू कितना होगा? तो ये वैल्यू होगा vt minus vb. So vt is 20 minus -5, so it will be how much? 25 meter per second. That means what? इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन अभी बर्ड के हिसाब से कितना स्पीड से आ रहा है. तो ये बर्ड है, बर्ड का स्पीड यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है, और ये ट्रेन कितना स्पीड से जा रहा है? इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो अगर 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है तो ये बर्ड को कितना टाइम के अंदर में क्रॉस करेगा? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? ट्रेन का लेंथ है 175 मीटर. तो जितना टाइम लगेगा पूरा ट्रेन का जो पूरा एंड पॉइंट है उसको बार्ड को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही होगा. दैट मीन्स टाइम टेकन विल बी हाउ मच? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड. तो डिस्टेंस कवर्ड इज 175 और स्पीड कितना हमें लेना है? रिलेटिव स्पीड दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड. दैट मीन्स 175 डिवाइडेड बाय 25. सो हाउ मच इट विल बी? 7. So it will be how much? 7 seconds. So answer will be 7 seconds. Option D. Okay, here in question number 93, what it is saying? Two parallel rail tracks run north south. On one track, train A moves north with a speed of 54 km per hour. On the other track, train B moves south with a speed of 90 km per hour. Okay, find the velocity of train A with respect to train B. Okay, there are two parallel tracks. Okay, so what it is saying is that there are two parallel tracks in the north-south direction. Clear? So this is one track. Clear? Here this is one track. Assume that let me just draw it once again. So this is one track, and here we'll take another track. Here we'll take another track. Clear? So assume that there are two trains. One train A is train A. Okay, just wait. Train A is moving towards north. This is train A. This is train A. Clear? So this is the top view. Train A which is moving towards north. Clear? And similarly there is another train. B which is moving towards south. Clear? So train A is moving with a speed of 54 km per hour. Train A is moving with a speed of 54 km per hour, and train B is moving with a speed of 90. This is 90. Clear? So finally here in this particular case, what it is asking what is the relative velocity, the velocity of train A with respect to train B. Velocity of A with respect to B.
So here in this particular case, upward motion will be considered as positive and downward motions will be considered as negative. Clear? So velocity of A minus velocity of B. Clear? So velocity of A with respect to ground frame minus velocity of B with respect to ground frame, but velocity of A with respect to ground frame is given how much? 54 plus, and velocity of B with respect to ground frame is how much? Minus 90. So how much it will be coming? So velocity of A minus velocity of B, 54 minus 54 minus minus 90. Clear? So how much it will be coming? It will be coming 54 plus 90, so almost 144 kilometer per hour. So 144 into 5 upon 18, so 8, so that means 40 meter per second. So velocity of A with respect to B is coming to be how much? 40 meter per second. So option D will be the correct one. Okay, this is a connected question to the previous one. So let me take the figure over here. यहाँ से figure को ले जाते हैं. So if we take the figure from here, okay, so here what it is actually saying is that, okay, so here in question number 93, what it is saying, what is the velocity of monkey? Okay, what is the velocity? Addition part is that the velocity of monkey running on the roof of train A. ट्रेन A का जो रूफ है उसमें दौड़ रहा है against its motion with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर. तो कितना वेलोसिटी से ये मंकी जो है, मान लो कि यहाँ पे एक मंकी है, देयर इज ए मंकी. क्लियर? ये जो मंकी है, मंकी वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रूफ टॉप, किसका, कौन सा ट्रेन का रूफ टॉप में दौड़ रहा है? ट्रेन ए का रूफ टॉप में दौड़ रहा है और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? दैट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? सो what it is asking is that, okay, with respect to train A, observe a man standing on the ground with what is the velocity of monkey? What is the velocity of monkey? Okay, with respect to a man standing on the ground, velocity, what it is asking, velocity of monkey in the ground frame, ये यहाँ पे कितना होगा? Okay, so here we know that velocity of monkey, what is given information, velocity of monkey with respect to train A is how much? Minus 18. Clear? Minus 18 kilometer per hour. Clear? Because we have already taken the sign convention that downward motion will be taken as negative. Clear? And velocity of train A with respect to the ground frame is 54 kilometer per hour. That means velocity of monkey with respect to train A, velocity of monkey with respect to A will be nothing but velocity of monkey minus velocity of A. But velocity of monkey, this is nothing but monkey with respect to a ground frame that we want to find out, and velocity of A is velocity of A with respect to G. So velocity of monkey with respect to A is minus 18 equal to VMG minus VAG is 54. Clear? So how much will be getting? VMG equal to 54 minus 18. So how much it will be coming? So it will be coming 36. It will be 36 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? तो मंकी का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी इन द ग्राउंड फ्रेम विल बी हाउ मच? 36. सो 36 का मतलब है यहाँ पे 36 इंटू 5 अपॉन 18, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड. कौन सा डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे होगा.
ऑप्शन बी। Okay, so here in question number 95, what it is saying is that a train A, which is 120-meter long, is running with a velocity of 20 meters per second, while train B, which is 130-meter long, is running in the opposite direction with a velocity of 30 meters per second. So there are two trains. There are two trains. This is train A. This is train A, which is running with a speed of 20 meter per second. It's 120 meter long. Similarly, there is another train. There is another train B, which is running in the opposite direction with a speed of how much? 30 meter per second and having 130 meter long. Clear? So what is the time taken by by train B to cross train A? Train B will cross train A. Then that situation will be what? So the situation will be, that means after some time ट्रेन ए, इफ ट्रेन ए इज प्रेजेंट ओवर हियर, मान लो कि कुछ समय के बाद ट्रेन ए अगर यहाँ पे होगा तो ट्रेन बी कहाँ पे पहुँच गया होगा? ट्रेन बी यहाँ पे कहीं पे। सो ट्रेन बी विल बी ओवर हियर। क्लियर? और ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। क्लियर? सो दोनों का एंड पॉइंट यहाँ पे साथ साथ रहना चाहिए, तभी जाके क्रॉस होता है। क्लियर? तो ये हो गया 130 और ये हुआ 120, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ विल बी हाउ मच? 250 मीटर। क्लियर? एंड द रिलेटिव वेलोसिटी, सो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर केस में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यू कैन से बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर? सो वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, that value will be VB minus VA. So VB is minus 30 minus VA is plus 20, that is minus 20, so minus 50. तो A के हिसाब से B का स्पीड कितना है यहाँ पे? A के हिसाब से B का स्पीड यहाँ पे है 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? A के हिसाब से B का स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड विथ दैट मच स्पीड, उतना ही स्पीड से उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? 250 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना है। क्लियर? तो इसको अगर हम फ्रेम वाइज ले जाएंगे, इसको अगर हम मान लो कि हम फ्रेम वाइज यहाँ पे लेंगे, तो सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन ऐसा रहेगा कि अब मान लो कि ऑब्जर्वर को हम मान लो कि इसको हम दूसरा तरीके से थोड़ा और लॉजिकली इसको समझाएंगे। तो मान लो कि ये ट्रेन है, दिस इज एज्यूम दैट हियर दिस इज ट्रेन ए, ये यहाँ पे क्या है? ट्रेन ए। क्लियर? हम यहाँ पे क्या निकल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो ऑब्जर्वर को हम यहाँ पे कहाँ बिठाएंगे? ऑब्जर्वर विल बी इन ट्रेन ए, दैट मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ पे एज्यूम करेगा ट्रेन ए का स्पीड कितना है? 0। क्लियर? देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, हाउ मच वी आर गेटिंग? तो ट्रेन बी का स्पीड कितना है? -50। दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस जो ट्रेन बी है उसका स्पीड अभी कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? ऑब्जर्वर जो कि ए में बैठा हुआ है उसके हिसाब से बी का स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट ट्रेन ए विल बी एट रेस्ट एंड बी विल बी मूविंग। क्लियर? ट्रेन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे? ट्रेन ए यहाँ पे रेस्ट में होगा और बी क्या होगा? ए के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। ए के रेस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। क्लियर? तो क्रॉस कब होगा? क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में आपको ध्यान में रखना है ए का स्पीड, रिलेटिव फ्रेम में ए का स्पीड हम 0 लेने हैं और बी का स्पीड कितना है? 50, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्रॉस होना शुरू कब होगा? जब दोनों का जो इंजन पोर्शन सामने की तरफ रहेगा सेम टाइम पे, और उसके बाद क्या होगा? बी विल स्टार्ट क्रॉसिंग, ऐसे क्रॉस करना शुरू होगा और फाइनली क्रॉस कंप्लीट कब हो जाएगा? जब यहाँ पे दोनों का एंड पॉइंट्स जब मीट करेगा। क्लियर? एक ही जगह पे लाई करेगा। तो दोनों का जो एंड पॉइंट्स कब लाई करेगा? क्लियर? तो यहाँ से शुरू हो रहा है। क्लियर? ये वाला पोर्शन से अगर शुरू हो रहा है तो टोटल बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? बी का इंजन वाला पोर्शन आप देखो पहले यहाँ पे, ठीक है? तो बी का इंजन वाला पोर्शन, सामने वाला पोर्शन पहले 120 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? तो यहाँ पे क्रॉसिंग खत्म नहीं हुआ। क्रॉसिंग अब कब खत्म होगा? जब
इंजन वाला तो पोर्शन यहाँ पे ए का एंड पोर्शन को क्रॉस मतलब एंड पोर्शन के पास अभी है, क्लियर। तो पूरा क्रॉस कब होगा, जब बी का पीछे वाला पोर्शन ए का एंड वाला जो पोर्शन पीछे वाला पोर्शन को क्रॉस करेगा। मतलब फिर 120 के बाद और कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा क्रॉसिंग होगा, और 130 डिस्टेंस जो कि ट्रेन बी का लेंथ है, क्लियर। तो टोटल इस वाले केस में टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, टोटल उसको 250 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना टाइम में, 50 कितना स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 250 बाय 50, सो इट विल बी 5 सेकेंड। सो विद इन 5 सेकेंड इट विल क्रॉस, 5 सेकेंड में यहाँ पे क्रॉस होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। Okay, so here in question number 96, what it is saying is that a jet airplane traveling at the speed of 500 kilometer per hour. Okay, fine. So jet तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, clear. So there is a jet airplane which is traveling. ये jet मान लो कि ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है with a speed उसका कितना है, speed is 500 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। ejects its products of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर। इट्स प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्टन जो उसका धुआं है, ये जो धुआं जो यहाँ से निकल रहा है, ये जो धुआं है इसका स्पीड कितना है, इट्स स्पीड इज 1500 किलोमीटर पर आवर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द जेट, क्लियर। द स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्टन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। जो ऑब्जर्वर अभी ग्राउंड में बैठा हुआ है उसके हिसाब से ये जो धुआं का स्पीड कितना होगा, क्लियर। जो जलने के बाद जो ऑयल है जो कि वहाँ पे यूज़ किया जाता है जेट को ऊपर की तरफ भेजने के लिए, तो वो जो जलने के बाद जो धुआं निकलता है उसका स्पीड यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में कितना होगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में, so speed of, here in this particular case, speed of product of combustion with respect to the jet plane, that is given how much, 1500 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, यहाँ पे दिया गया। बट VCJ कैन बी रिटन एज VCJ इज नथिंग बट VC माइनस VJ, and VC is the product of combustion with respect to the ground frame, and VJ is the velocity of jet plane with respect to the ground frame, clear. So VCJ is given as 1500 and that is in the negative direction. Why it is taken as in the negative direction? Because upward motion will be considered as positive and downward motion will be considered as negative, clear. So that will be minus 1500 equal to VCJ, velocity of combustion with respect to the ground frame, that we need to find out, and velocity of jet plane is how much, that is 500, clear. So finally here in this particular case VCG will be equal to how much, minus 1500 plus 500, so that will be how much, minus 1000. So minus 1000 kilometer per hour. That negative sign here indicates what? That negative sign indicates that this products of combustion will come out of this jet plane with a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है, क्लियर, ये वाला केस है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। Okay, so here in question number 97, what it is saying is that you can see, just look at the figure. On a long horizontally moving belt, this is a belt, just like think that this is a kind of escalator here. A child runs to and fro with a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि जो जैसा एस्केलेटर ऊपर की तरफ चढ़ता है जो शॉपिंग मॉल में हम देखे होंगे, तो वैसा ही एक एस्केलेटर है जिसके दोनों एंड में कौन है, दोनों एंड में फादर एंड मदर है, वो भी साइमल्टेनियसली जो बेल्ट है, जिस बेल्ट का जो स्पीड यहाँ पे दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर, उतना स्पीड से वो ये सभी मूव करें, क्लियर। लेकिन चाइल्ड क्या है, दैट चाइल्ड इज मूविंग टू एंड फ्रो विथ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। मतलब ये जो चाइल्ड का स्पीड है वो कितना है, वो 9 है, यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो एक बार कभी फादर से मदर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है,
तो कभी राइट से लेफ्ट, मदर से फादर की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो ये वाला केस है। तो एंड इट इज ए मूविंग फ्रेम। ये जो क्या है, दिस इज ए मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम। ओके, so and here in this particular with and 9 kilometer with a speed of 9 between his father and mother located 50 मीटर apart on the moving belt। ये जो फादर एंड मदर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। क्लियर? तो आप समझ लो कि एस्केलेटर है, उसमें मान लो कि फादर एंड मदर 2-3 मीटर डिस्टेंस पर है और उनके बीच में एक चाइल्ड है जो कि कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है। क्लियर? द बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। बेल्ट का स्पीड यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया है फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, ये जो ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस ओ रेड कलर, ये ऑब्जर्वर है। क्लियर? जो कि स्टेशनरी प्लेटफॉर्म में है। द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बेल्ट इज, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से चाइल्ड का स्पीड कितना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। तो यहाँ पे द स्पीड ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है और वो कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बट व्हाट it is given, but what we want to calculate, we want to calculate speed of child in the ground frame। ground frame कितना होगा, तो speed of child in the moving frame कितना होगा, vc माइनस vb, that is vcg माइनस vbg and that is equal to vcb। clear? So that implies vcg equal to vcb plus vbg। so vcb is how much, vcb is 9। clear? And vbg 9, why we are taking 9, because the child moves along the direction of motion of belt and towards right। तो राइट साइड की तरफ जो मोशन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जो मोशन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है। क्लियर? सो +9 and vbg velocity of belt with respect to the ground frame is given 4। so it will be how much, it will be 13 km/h। velocity of child with respect to the ground frame will be how much, 13 km/h। so option B will be the correct one। okay, so next question, okay, it is a similar kind connected question। so in question number, what it is saying, in question number 97, the speed of child running opposite to the direction of motion of the belt। okay, here in this particular case speed of child जो है यहाँ पे, ये मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? इट इज़ नथिंग लाइक दिस चाइल्ड। ओके, this child is moving with a speed of 9 km/h। 9 km/h के स्पीड से ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट जा रहा है। तो वही गिवन इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, गिवन इज व्हाट, VCB इज -9 km/h। क्योंकि हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या एज्यूम करना है, लेफ्ट साइड की तरफ मोशन होगा नेगेटिव और राइट साइड की तरफ जो मोशन होगा उसको हमें पॉजिटिव लेना है। क्लियर? सो VCB इज व्हाट, VCB इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। so finally over here VCB is -9 equal to VCG minus velocity of belt with respect to the ground, that is given 4 km/h। so that is 4, so that implies VCG is how much, -9 plus 4, so that will be -5 km/h, -5। that means what, the observer who is present over here, this is the observer who is present over here, he will find with respect to him the velocity of the child। ये जो child है इसका velocity कितना होगा, 5 होगा लेफ्ट की तरफ। इसका velocity कितना होगा ग्राउंड फ्रेम में, 5 होगा लेफ्ट की तरफ। so 5 towards left, so that means 5 km/h। ओके, नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो ए कनेक्टेड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 97 वही क्वेश्चन है, उसमें जो है टाइम टेकन बाय द चाइल्ड टू गो फ्रॉम फादर टू मदर एंड बैक टू फादर। ओके, चाइल्ड यहाँ पे क्या करे, फादर एंड मदर के बीच में पहले से डिस्टेंस हमें कितना बताया गया है, वो है 50 मीटर। क्लियर?
तो फादर टू मदर एंड देन बैक टू फादर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered by the child is how much? 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, क्लियर। अच्छा 100 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, और तो स्पीड तो हमें मालूम है, तो कितना टाइम उसको यहाँ पे लगेगा, क्लियर। अच्छा तो पहला 50 मीटर जब वाइल मूविंग फ्रॉम हियर इन दिस केस, हाउ मच टाइम, टाइम टेकन टू मूव, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम फादर टू मदर, फादर टू मदर मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, क्लियर। अच्छा भाई ये केस में एक चीज़ तो हमें ध्यान में रखना है कि ये सभी लोग यहाँ पे मूविंग फ्रेम में है, क्लियर। फादर भी मूव कर रहा है, मदर भी मूव कर रहा है, क्लियर। फादर जितना फादर का स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, मदर का स्पीड भी कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। दोनों क्योंकि दोनों मूविंग फ्रेम में, और वो मूविंग फ्रेम में रेस्ट में है, क्लियर। तो फादर के हिसाब से क्या होगा, मदर रेस्ट में होगा, मदर के हिसाब से क्या होगा, फादर वहाँ पे रेस्ट में होगा, क्लियर। बट फादर एंड मदर के हिसाब से चाइल्ड यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, क्लियर। सो चाइल्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द चाइल्ड टू गो फ्रॉम फादर टू मदर एंड देन बैक टू फादर। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस जब ये चाइल्ड फादर टू मदर जाएगा तो मदर उसको देखेगा, क्या देखेगा, तो अकॉर्डिंग टू मदर द चाइल्ड विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। चाइल्ड का स्पीड कितना है, चाइल्ड का स्पीड यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर है। ये फ्रेम मूविंग फ्रेम में हो रहा है, अभी स्टेशनरी फ्रेम से ऑब्जर्वर नहीं है। अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है, राइट नाउ ऑब्जर्वर इज ओवर हियर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, क्लियर। तो ऑब्जर्वर मदर के फॉर्म में यहाँ पे क्या देख रहा है, चाइल्ड 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फादर से उसके तरफ आ रहा है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर, तो टाइम कितना लेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस इज 50 मीटर एंड स्पीड इज हाउ मच 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 किलोमीटर 9 × 5/18, so 5/2 मीटर पर सेकेंड, so it will be how much, it will be 100/5, it will be how much 100/5, so it will be 20. Time taken is 20 seconds, clear. Similarly here in this particular case time taken to move from mother to father, clear. अब वही ऑब्जर्वर भले ही आप मदर के पास रख लो या फिर फादर के पास रख लो, अब फादर के पास ऑब्जर्वर को रख लेते हैं। तो ऑब्जर्वर, फादर बिंग द ऑब्जर्वर, अभी वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि चाइल्ड मदर से फादर की तरफ आ रहा है तो कितना स्पीड से आ रहा है, वही 9 किलोमीटर ही होगा, क्लियर। तो 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर। सो टाइम टेकन विल बी लेट इट बी टी प्राइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कवर इज 50 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 9 × 5/18। तो हाउ मच इट विल बी सेम 100/5, दैट इज 20 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा, वही सेम टाइम ही लगेगा, क्लियर। मूविंग फ्रेम में सेम टाइम यहाँ पे लगता है। तो फाइनली here in this particular case the total time taken will be how much, t plus t prime, that is 40 seconds. total time कितना लगेगा 40 seconds, it will take 40 seconds, clear. तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इस वाले पर्टिकुलर केस में अभी ये बाहर में नहीं है, ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है, क्लियर। तो ये ऑब्जर्वर अगर इस फ्रेम में होगा, जैसे कि आप मान लो कि सिचुएशन, जैसा कि आप मान लो कि बस केस में, क्लियर। तो बस मूव करता है तो उसके अंदर में जो पैसेंजर होते हैं, पैसेंजर भी साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, लेकिन अंदर में बैठा हुआ पैसेंजर अपने बगल वाले पैसेंजर को कैसे देखे आप, वो भी रेस्ट में, उसके हिसाब से साइड वाला हर एक पैसेंजर रेस्ट में होगा। जस्ट आप जो टिकट कलेक्टर, जो आपका जो कंडक्टर है, उसको छोड़ के वो अगर कंडक्टर मूव कर रहा है अंदर में, तो वही खाली मूव करे अपना नॉर्मल स्पीड से, क्लियर। तो बस के फ्रेम में अंदर में हर एक इंसान रेस्ट में होगा। अगर मान लो कोई अंदर में मूव कर रहा है तो वो नॉर्मल स्पीड से हम उसको देखते हैं, क्लियर। बट ऑब्जर्वर अगर मान लो कि हम बाहर से देखेंगे तो हर बस, अगर बस मूव कर रहा है तो बस के अंदर में जो पैसेंजर्स हैं वो सभी मूव कर रहे होंगे, क्लियर। ये अलग सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये मूविंग फ्रेम के अंदर वाला सिचुएशन है, तो इसीलिए यहाँ पे फादर एंड मदर को यहाँ पे रेस्ट में एज्यूम किया जा रहा है।
and the child is moving from father to mother with a speed of 9 km/h and from mother to father with the same speed. तो डिस्टेंस कवर अगर 50 मीटर हुआ तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 40 सेकेंड्स उसको टाइम लगेगा. नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद जीरो वेलोसिटी. क्लियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड जीरो रिलेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके फाइन. सो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेलोसिटी ही नहीं है. वेलोसिटी इन बोथ द केसेस जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी तो और जीरो ही हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे इन दोनों केस में अगर हम देखेंगे तो पहला जो लाइन ए लाइन बी, इन दोनों का स्लोप, इसका स्लोप भी ए है और इसका स्लोप भी बी है. भले ही पोजीशन अलग अलग पोजीशन से निकल रहे हो, बट स्लोप तो दोनों का पैरेलल है, मतलब स्लोप दोनों का सेम होगा. क्लियर, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए इक्वल टू स्लोप of b because they are parallel. Clear, that means va will be equal to vb. तो relative velocity of a with respect to b और b with respect to a, that will be 0. Clear, तो इसमें relative velocity vab and that will be equal to vba and that will be equal to 0. तो इस वाले केस में आपको 0 मिलेगा, ये वाला केस होगा. इसमें ऑप्शन सी में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इस वाले पर्टिकुलर केस में b भले ही थोड़ा मतलब थोड़ा दूर से निकल रहा है ओरिजिन से, और ए भले ही थोड़ा पास से जा रहा हो, मतलब अपना मोशन शुरू कर रहा हो, लेकिन बी का स्लोप थोड़ा कम होगा ए से, मतलब ए का वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस वी ए ग्रेटर देन वी बी. क्लियर, सो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं होगा. क्लियर, यहाँ पे 0 नहीं होगा. सिमिलरली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस विल गेट वेलोसिटी फ्रॉम ए लाइन. वाई, बिकॉज इट इज़ मेकिंग सम एंगल, सो स्लोप यहाँ पे हमें कुछ वेलोसिटी देगा, बट बी का स्लोप यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होगा. क्लियर, सो यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, यहाँ पे तो वेलोसिटी ही नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगा. क्लियर, यहाँ पे वेलोसिटी ही नहीं है तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन.